Namaskar. Please focus on the combination of the words I'm just saying. Spark, knowledge, great life, and dreams. This line of combination, the spark, knowledge, great life, and dreams. It's a chain. It goes together. And we always talk about knowledge. The spark make us achieve knowledge. Then the greater life needs dreams. If we don't have dreams, we can't have a greater life. Dreams will be there. Then the action will be there with that spark. The knowledge will help. Then we can have a greater life. And always keep in mind that the smaller dreams, if your dreams are small, that can never be stuffed into a greater life. If you need greater life, you will have to dream greater. If you have small dreams and then you want greater life, not possible. Never can happen. Because when the dream is small, your actions will be small. Your urja or your spark will be small. For a greater life, you need greater dreams. Small dreams can never be stuffed into a greater life. This is a combination: spark, knowledge, greater life, and the greater dreams. Now in Hindi, अब हिंदी में जो ऊर्जा है, जो ज्ञान है, नॉलेज, और जो बहुत बड़ी एक चमकती हुई जीवन है, उसके लिए हमें सपने लेने होंगे. सपने मीन्स डिजाइन्स. अगर हमारे सपने छोटे हैं तो हम बड़ी लाइफ कभी भी नहीं बना पाएंगे. सपने बड़े होंगे, नॉलेज उसके ऊपर काम करेगी, स्पार्क उसके ऊपर काम करेगा, तो वो बड़ी लाइफ के बीच में फिट हो जाएंगे. सो ऑलवेज हैव ए स्पार्क, ignition, knowledge, and then greater life with the backing of the dream. Bigger dreams, fine dreams, design dreams. So these 4 things will get us a great life. The spark, the knowledge, greater life, and the dreams, the greater dreams, because the smaller dreams can never be stuffed into a greater life. तो हिंदी में हमने वही बोला कि ऊर्जा, ज्ञान, एक शानदार जीवन, ऊर्जावान जीवन जो किसी को कुछ दे सके, उसके लिए सपने चाहिए. सपने मीन्स एक डिजाइन. डिजाइन होगा तो उसको बनाया जाएगा. डिजाइन ही नहीं होगा तो जीवन कैसे बनाया जाएगा. And I always talked, even in my previous video, I talked about the Upanishads, the Vedic extract. Again, that is a knowledge. And that is not a simple knowledge. That is the extract of the knowledge which is not available anywhere in this world. Only Vedas. We can declare it authentically that there is no other knowledge in this world except Vedas. They were the real books of the knowledge written by different rishis and all that. So the extract was in Upanishads, and we are taking that slowly in my
previous video, I talked about some Upanishads and their extract. So today our topic was spark, knowledge, greater life, and greater dreams. Now, and anytime I talk on my video, I want to inject energy, spark, because that is the origin or the seed for everything. No spark, no knowledge can be gained. Then everything needs that spark and knowledge, and then greater life and dreams. Now, I will take 1 minute people want very quick things. So for a quick exercise, we should do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. And then like this, 1, 2, 3, 4, again up to 20. Then this, again up to 20. Then this, then this, then this, then this, then this for a few seconds. Then quick exercise for the backbone, which is the key of everything. When we talk about the backbone, that's the key of everything. What we'll do, we'll stay like this and do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 times. If you are in rush, otherwise you can take it 50 times also. Then on the other side, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now this exercise is talking with the backbone. And the backbone goes all the way from upper to the lower, for the eyes, for the brain, for the body, for this portion, everything is taking shape. Then everything is. And keep in mind, if we do 25 times like this, we'll do 25 times this. 25 times on the right, 25 times on the left. Okay, now I will take 1 minute for the English people जो हिंदी इंग्लिश नहीं जानते, थोड़ा सा मैं उनको बताता हूँ हर वीडियो में 1 मिनट के लिए. नो टुडे आई विल टॉक अबाउट मेकिंग ए टी. आज हम इंग्लिश में चाय बनाने की बात करेंगे. चाय बना रहे हैं हम, इंग्लिश में बात करेंगे. शुरू करते हैं. टेक ए कप ऑफ वाटर. टेक ए कप ऑफ वाटर. हमने 1 कप वाटर का लिया. पुट इट ऑन द स्टोव इन ए पैन. पुट इट ऑन द स्टोव इन ए पैन. थर्ड, लेट इट बॉयल. लेट इट बॉयल. पहला हमने बोला कि 1 कप पानी लो. टेक ए कप ऑफ वाटर. उसको एक पैन में डालो. पुट इट इन ए पैन. देन पुट दैट पैन ऑन द स्टोव. उस पैन को स्टोव के ऊपर रख दो. लेट इट बॉयल. इसको उबलने दो. देन तब उसमें 1 टीस्पून ऑफ चाय की पत्ती. पुट 1 टीस्पून ऑफ टी लीव्स इन दैट. अब उसको 1 मिनट उबलने दो. लेट इट बॉयल फॉर 1 मिनट. नो अब उसको 1 कप में छान लो. नो स्टेन इट. छानने का मतलब स्टेन इट. नो स्टेन इट इन ए कप. थोड़ा सा दूध डालो. पुट सम मिल्क. चाय बन गई. टी इज रेडी. नाउ पुट 1 टीस्पून ऑफ शुगर. 1 चम्मच शुगर का डालो. पुट 1 टीस्पून ऑफ शुगर. नाउ उसको पी सकते हैं. नाउ
अब नाउ वी कैन ड्रिंक इट। अब इसमें मैंने आपको पूरा चाय बनाने का बता दिया इंग्लिश में। तो ऐसे स्टोरी बन जाएगी कि पानी लिया, टेक ए कप ऑफ वाटर, पुट इट इन ए पैन, एक पैन में डाल दो, देन पुट इट ऑन द स्टोव, स्टोव पे रख दो, देन लेट इट बॉयल, उसको बॉयल होने दो, देन पुट ए कप 1 टीस्पून ऑफ टी लीव्स, पत्ती डालो 1 चम्मच, देन स्टेन इट, उसको छान लो इन ए कप, देन पुट ए little sugar, put 1 teaspoon of sugar, then put some milk, थोड़ा दूध डालो, tea is ready. Now this can make you very easy to make some story. And the second is, there was a sparrow on a tree. There was एक चिड़िया पेड़ के ऊपर थी. There was a sparrow on a tree. There was a sparrow, एक चिड़िया थी on a tree, एक पेड़ के ऊपर. She was making a nest, वो अपना घोंसला बना रही थी. She was having dry grass in her mouth, उसके मुंह में तीले थे dry grass के. She used to go there at some other place, वो किसी दूसरी जगह जाती थी. Used to pick the grass and come back, वो फिर वापस आ जाती थी. Then again she go to the same place, pick a grass and come back, फिर वो दोबारा आ जाती थी. No, जब हम ऐसे स्टोरी बनाना शुरू करेंगे तो we will be familiar with that flow. English is a flow. When we get flow, जब हमें फ्लो आ जाता है इसका, तो वर्ड्स तो मिलते रहते हैं, तो वर्ड्स को हम करते रहते हैं, तो आ जाती है इंग्लिश. धीरे धीरे we will be talking about some stories and all that, and आप कंफर्टेबल हो जाएंगे. आप इसको इंग्लिश के और भी छोटी छोटी बुक्स भी पढ़िए और इसको स्टोरीज को पढ़िए. स्टोरीज को पढ़ने से बहुत अच्छा रहता है, छोटी छोटी स्टोरीज. आई विल टेल यू, मैं आपको और स्टोरीज बताऊंगा कमिंग वीडियोज में. सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट द स्पार्क, अबाउट द नॉलेज, अबाउट द ग्रेटर लाइफ, अबाउट द ग्रेटर ड्रीम्स. Because dreams are just designs. If we have nice bigger designs, we can create great life. And that spark and knowledge is a must. And we always talk about knowledge. And this all totality will empower our health. This all totality will empower our health, make us drive oriented. And drive-oriented people with spark always have good health. You can't find a lazy, lethargic person with nice health. So today, namaskar. I am done with it. I hope you people will like it. Try to tell your friends to subscribe it so that I can go on giving you better and better, and it will be reaching to the community and all those people. Thanks.